Hi guys, this is Arya and this video is regarding one of the most basic things pertaining to CLAT exam. That is the reading speed. Most of us, we're not able to complete the paper. या तो maths रह जाता है या तो legal के 2 paragraphs रह जाता है, something like that, right? Our aim is to attempt the entire paper, of course with accuracy, but पहले paper तो complete हो. We often come up with question that's like how to increase the reading speed. हमें ठीक लगता है कि ठीक है ना, हमारी reading speed कम है, तो हम धीरे पढ़ रहे हैं, तो हम धीरे पेपर कर रहे हैं, तो हमें रीडिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत है. कि जो प्रॉब्लम है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता 2 घंटे के अंदर, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर क्लैट मॉक. द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट व्हाट इट अपीयर्स. इट इज नॉट जस्ट रिगार्डिंग द रीडिंग स्पीड. द प्रॉब्लम इज टू फोल्ड. It's reading speed and comprehending speed. And truth be told, it's more about comprehending speed than it is about reading speed. क्योंकि ऐसा कई बार होता होगा ना आप लोगों के साथ कि 3 पैराग्राफ्स, ठीक है, आपने पैराग्राफ 1, 2 पढ़ लिया एंड जब आपका पैराग्राफ खत्म होता है ना, आप 2 लाइन की समरी नहीं लिख सकते उस 2 पैराग्राफ के बारे में. That's because you read quickly, right? As you were supposed to, but you didn't understand shit. So that means that the problem is with our comprehending skills. This is how we solve it. And the solution is very simple, okay? You just need to read 3 newspaper editorials per day. That's about it. But I made the sentence wrong. I'm not saying just reading, क्योंकि आप में से obviously अगर आप एक serious CLAT aspirant, I'm taking it as given कि आप newspaper तो पढ़ते ही होगे, right? You need to comprehend 3 newspaper editorials every day. इसलिए कि आप comprehend ठीक से करो, I highly recommend, as one of the CR teachers in my institute also recommended, कि आप पढ़ो आर्टिकल और फिर उसकी समरी लिखो. क्योंकि पता है क्या होता है, आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आपने साउथ चाइना सी के ऊपर पढ़ तो लिया, एंड यू आर लाइक ओके फाइन, I read it, maybe I learned a few words, but then you leave it there. If you have the pressure of writing a summary, then you tend to get automatically more focused on reading the article. ठीक है, तो आपका ऐसे होता है. So summary holds you accountable to comprehend it the best. And that's about it. आप यही activity, I kid you not, do it for 2 weeks, you're gonna see the result in your the second week's Sunday mock. Really, just exact advice that I'm giving. And of course, I applied it to myself and I was able to complete the paper. But I was able to complete the paper not just because of my comprehending skills, but also because of my reading speed. ठीक है? This solution stands for comprehending. Now, the reading speed. We would never be able to finish the entire paper in the sense paragraph भी पढ़ लो, question भी पढ़ लो, options भी पढ़ लो, तीनों को comprehend भी कर लो और correct वाले को OMR पे mark भी कर दो 1 मिनट में. That's almost like, that's a Himalayan task to do. तो अब आप क्या करोगे? आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है पेपर में, क्योंकि आप सब कॉम्प्रिहेंड करने नहीं बैठ सकते. आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो, आप सब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, करोगे पेपर छूटेगा. सो व्हाट यू डू इज कि अब ना आप सेलेक्ट करते हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव एन एंटायर पैराग्राफ और अ क्वेश्चन और व्हाटएवर. वी आर नॉट सपोज्ड टू लीव एनीथिंग. सो व्हाट वुड वी लीव? वी वुड लीव द लाइन्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट. And I know how this is, how stupid this is. You're going to be like, 3 लाइन नहीं पढ़ के कौन सा टाइम बच जाएगा. बट आपको 25 पेजेस पढ़ने होते हैं. सो अगर आप हर पेज में से कुछ लाइनें छोड़ोगे, आपका पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ नीडेड चीज को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो. एंड इन दोनों चीजों को कंबाइन करके आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा. अब मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देती हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. व्हेन आई से लीविंग आउट, I will show you how I left out the needless material and only read what was important and of course comprehended it later. Let me demonstrate it. Alright, so this is an example of how I read. ठीक है, ये underlining और encircling was my technique of giving command to my brain कि ये चीजें हैं, अंडरलाइन जो है, जो इंसर्कल्ड है, जिसे दिमाग में रखना है, जिसे कॉम्प्रिहेंड करना है. मतलब कि जैसे ये वर्ड्स हैं कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइजेस 3 टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब कि 3 टाइप ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं. तो मेरे माइंड में रजिस्टर कर लिया, ठीक है, इनोसेंट है, नेग्लिजेंट है, फ्रॉडुलेंट है. एंड देन उनकी रिगार्डिंग थोड़ी डिटेल दी हुई, जिनमें से ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेगा, जिसको मैंने अपने हिसाब से आई हैव अंडरलाइंड. दिस इज माई वे ऑफ टेकिंग आउट द इन्फॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम दिस ह्यूज पैराग्राफ. मैं आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ, नया पैराग्राफ जिसे मैंने आज तक देखा नहीं है, I'll be reading and I'll be doing the same technique so that you all can also see how I read what was supposed to be read and left out the rest, and how I made meaning of the limited number of words that I mark. All right.
Alright, so this is the paragraph that I'm taking that I have not read ever before, and see how I mark the words and lines to differentiate कि क्या पढ़ना है, क्या notice करना और क्या ignore करना. Though I know this looks a little messy, क्योंकि maybe because of choice of pen and also the camera angle, I'm not able to write like, I'm not able to do it like the way I used to, so it was a little uncomfortable. But basically, this is how I read it. ठीक है, अब अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा हो ना, तो आप बस जो मैंने वर्ड्स एंड सर्कल करे ना, बस आप वो पढ़ना एंड देखना, उसके बाद भी यू वुड गेट द एग्जैक्ट सेम मीनिंग जो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के आएगा. ठीक है, लेट्स ट्राई. आई थिंक अभी तक आपने पैराग्राफ रीड कर लिया होगा. इफ नॉट, यू कैन जस्ट पॉज इट एंड गिव इट अ रीड, एंड देन नाउ I am just going to read the words that I've marked and see there is no difference between the summary of the paragraph. ठीक है, आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी और फर्स्ट लाइन से आपको समझ आ गया पैराग्राफ में किस चीज की बात होने वाली है. पैराग्राफ में उन्हीं चीजों की बात होती है. मिस्टेक मतलब लेट्स से एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा थोड़ा सबकी डेफिनेशन दी हुई है. और गाइस, तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक लीगल का पैराग्राफ पढ़ा था. नाउ आई एम गोना रीड एन इंग्लिश पैराग्राफ दैट अगेन आई हैव नेवर read before. I started reading this before actually pressing the record button, so I'm gonna start from here. All right. Okay, so this paragraph talks about compared to the previous generation and how we're doing good physically, but mentally we're going backwards. Basically, the ultra quote-unquote wokeism, if that's a thing. Basically, it's all author's point of view, of course. This paragraph, quite lengthy, talks about, yes, just this, okay? So now what I did was, I literally encircled what was important. I rejected, my brain automatically rejected the information that I thought was generic and उसको specially mark, comprehend, understand करने की जरूरत नहीं है. तो जैसे अगर आप इन circles को देखोगे, if you read just what I have encircled, you're gonna get an idea of what is being talked about in the paragraph. ठीक है, let's take a look. 17 cents, dollar, healthcare. Third of adults are obese. Fifth, experience mental illness. Current generation, most obese, medicated, mentally ill. Personal agency, too much instant gratification. Major institutions. Alright. 13-year-olds, fat removing, surgery, 70% increase. Again, I didn't do serotonin, but it was given. Okay. Depression. Reclaim their agency. Work every day. Millennial counterparts. Positive changes, physical health. Today's students, worst mental health. Stunted social interaction, new hazards. Electronic vapes, every street corner. Social media is a personal choice, but empowering. Cognition, meaningful relationships. Ignore this reality, lacking fulfillment among teenagers. Predecessors. Okay. Now tell me, मैंने जो इस पैराग्राफ की समरी बताई, क्या अगर आप सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ो तो क्या आपको नहीं समझ आएगा कि what this paragraph is about? ठीक है. So basically this is how I read, which is why if I were to attempt this, I would have not taken more than let's say like 30 to like 40 seconds to read this. जबकि this is a text heavy paragraph. So that's about it. ये बहुत टाइम से आता है. मैंने approximately 40 mocks के around दिए हैं to get to this pace and clarity. So you're going to take your time. And again, ये encircle करना ज़रूरी नहीं है. कुछ लोग underline करते हैं, कुछ लोग सिर्फ टिक करते हैं, कुछ लोग मार्क लगा लेते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें इसकी भी ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. And whatever it is, just know, एक लाइन बस मैं समझाना चाहती हूँ कि आपको सब नहीं पढ़ना है. So you cannot go like, meantime, our culture of instant gratification has created a healthcare system that refuses to face root causes. The American Academy of Pediatrics suggests that 12-year-olds struggling with obesity, you're not supposed to do this. You're not supposed to go like, ekdam sara, you're not supposed to read everything. You're not supposed to read everything, and which is why I've made this elaborated explanation. अगर आपको किसी लॉ के बारे में पहले से पता होगा तो अब आप पता क्या करोगे, मिस्टेक है ना, आप मिस्टेक को सिर्फ एक लुक दोगे जैसे मैंने दिया है. यू वॉन्ट रीड की अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स म्यूचुअल कंसेंट. यूल बी लाइक दैट्स हेल ऑब्वियस, कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होता है, एंड यू जस्ट ओवर रीड इट. ठीक है.
मीटिंग ऑफ माइंड्स वगैरह, देखो मैंने ये दूसरी लाइन को पूरा इग्नोर किया है. क्यों? बिकॉज मैंने इतने बार इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है दैट आई नो व्हाट देयर गोना से, बट स्टिल व्हाई डू आई रीड इट? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज चांस दैट इट गिव्स समथिंग इन अ पैराग्राफ दैट आई मिस और दैट गेट्स आउट ऑफ माय माइंड व्हाइल आई एम अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो अब जैसे मुझे पता लग गया मिस्टेक, अब मिस्टेक में मैं सिर्फ एक ओवरलुक लूंगी कि ठीक है मिस्टेक में क्या क्या होता है, लाइक वही सब है, सेम चीज, ठीक है. आई मूव अहेड. लैक ऑफ कैपेसिटी, अगेन मेरे को पता है कि लैक ऑफ कैपेसिटी का मतलब क्या होता है. क्यों? क्योंकि मैंने टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है. तो फिर मैंने वापस से हल्का सा लुक ले लिया. अनकंसाइंसेबल, मुझे पता है कंसाइंस का मतलब क्या होता है, तो अन लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो मैंने फिर भी थोड़ा लुक मार लिया. इलीगैलिटी, आपको भी इसका मतलब पता होगा. ड्यूरेस, अगेन मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा हुआ है, पता है. इम्पॉसिबिलिटी पढ़ा हुआ है, पता हुआ है. वेवर पढ़ा हुआ है, पता है. तो आई गॉट डन विद दिस पैराग्राफ in a matter of what? I don't even think I took a minute for this. Why? Because ये पढ़ा हुआ था. हाँ, अगर ये नहीं पढ़ा हुआ होता, अगर मेरे को, मैं मिस्टेक पहली बार पढ़ रही होती, मैं ड्यूरेस पहली बार पढ़ रही होती, तो हाँ मुझे इसमें 1-1.5 मिनट आराम से लगता है, 2 मिनट भी हो सकता है, लग सकता था समझने में. बट दैट डिड नॉट हैपन. Why? Because I already had an idea of what is being discussed, which is why we do CLK, which is why जब भी हमारे न्यूज़पेपर में कोई भी नया टॉपिक आता है, कोई भी नया लॉ अमेंडमेंट, हम पहले से ही उसके नोट्स बना लेते हैं, ताकि कोई भी नए पैराग्राफ में उसके बारे में मेंशन हो, हम एकदम ऐसे उसमें वो ना हो कि ओ शिट ये क्या दे दे, दिस इज न्यू. नथिंग शुड बी न्यू इन योर क्लैट पेपर. आपको उतना बेस्ट ट्राई करना है, ठीक है. So that's about this video, guys. If you have any doubt pertaining to this topic or CLAT in general, please drop it in the comment section. Thank you so much for watching the video.